Hello students, this is DG sir from behalf of Learners Academy. I teach here mathematics for JEE level. So today I am choosing a topic for you all. This is a conic section and this topic is very important from entrance point of view. So first of all, let's discuss briefly about this part, conic section. Okay, so first of all, general equation of any second degree curve. Let us write down the general equation of any second degree curve. So as we all know, the equation goes somewhat like this. It's ax squared plus 2hxy plus by squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay? So this is the general equation of any second degree curve. Now based on this general equation, we can derive many conclusions. First of all, if you see carefully, so we have to find two methods. First method, we have to find the value of a certain determinant. Now what is the determinant? See, so determinant value delta, that will be equal to C. So this is the value of the determinant. Now based on this value, we can judge various conclusions. So if the value of this delta determinant comes up to be 0, then this above equation, it will be representing a pair of straight lines. Okay? This equation will be representing a pair of straight lines. But if your delta value comes out to be not equal to 0, then we can derive 4 conclusions. What are those 4 conclusions? First, you should see that your h component, if your h component is 0 and if your coordinates x square and y square composite coefficients are come out to be equal, then this certain condition represents a circle. That means if your h xy term is 0 and if your coefficient of x square and y square comes out to be equal, then this certain equation will be representing our circle. Okay. Secondly, if we have this kind of condition where h square value comes out to be equal to the product of a and b, then this condition represents your parabola. Okay. If your h square value comes out to be less than ab, then this equation will be representing your ellipse. And if your h square value comes out to be greater than ab, then this equation will be representing your hyperbola. Now all these parts, these are all part of the conic section. What is a conic section? As you have seen, this is one kind of a cone. Now from this cone, if we cut off various shapes, if you cut this top portion of the cone, then we shall be getting a circle. Okay. If you cut the cone in this way, then we shall be getting an ellipse. Likewise, there are various shapes related to parabola and hyperbola. All these particular shapes come out from this conic section. So goes the name of the chapter, conic section. Now suppose I want to discuss about circle. So how to write down the equation of a circle in general form. How to write down the equation of a circle in general form. As we know, for a circle, two conditions should be there. First, there should be no xy term. मतलब सर्कल के इक्वेशन पे कहीं भी आपको xy टर्म नजर नहीं आएंगे. इसका मतलब आपका जो h वाला वैल्यू है वो आपका 0 आएगा. सेकेंडली, आपका जो कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर और y स्क्वायर का, बोथ ऑफ दोस कोफिशिएंट्स शुड बी इक्वल. सो अगर आपका ये दोनों कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड, दैट मीन्स योर जनरल इक्वेशन जो मैंने डिस्कस किया था वो हो जाएगा आपका सर्कल का इक्वेशन. जैसे कि देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस bx स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c equal to 0. This was my general equation. Now if I put these conditions on this general equation, your equation turns out to be x square, ये वाला टर्म तो हो गया 0, y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So this is my general equation of a circle. Now on this general equation, if I want to write down the center and the radius, for circle, the two more important parts is your center and your radius. So how to write down the center of the circle? So we should remember one formula. For finding out the center of a circle, we just use this formula, half of coefficient of x minus half and minus half of coefficient of y.
मतलब x और y का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करो, माइनस लगा दो, ठीक है। सिमिलरली if you see carefully, what is the coefficient of x in this part? It's 2g. What is the half of 2g? g, आगे लगा दो माइनस साइन, that means minus g. Similarly, what is the coefficient of y here? 2f, उसका हाफ करो, हो गया f, आगे लगा दो माइनस साइन, मिल गया माइनस f. So this is my center of a circle. Now for center it's okay. Let's find out radius. How to find out radius of a circle? जो भी आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया उसका स्क्वायर करो, माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर. नेक्स्ट जो दूसरा ऑब्जर्वेशन इक्वेशन पे देखो, इफ यू हैव प्लस साइन हियर जस्ट पुट हियर माइनस साइन, दैट्स इट. सो योर रेडियस विल बी, इफ आई राइट इट ओवरऑल, रेडियस विल बी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. सो दिस इज द जनरल इक्वेशन. फ्रॉम द जनरल इक्वेशन वी हैव पुट डाउन द कंडीशंस and we have got the center and radius of a circle. Now suppose your center is given to be a comma b. Suppose, ठीक है, आपका center given है a comma b of a circle and this is given to be your radius. R ले लेते हैं उस radius को. So how to write down the standard equation? How to write down the standard equation of a circle whose center is a comma b, radius is r. सीधा सीधी इसको याद कर लो, x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. ठीक है. अगर आपका सेंटर हो गया 0,0, सपोज योर सेंटर इज गिवन टू बी 0,0 एंड योर रेडियस इज गिवन टू बी r. So in that case, put 0, 0 in place of a and b. So your equation reduces to x square plus y square equal to r square. ठीक है. These are the standard equations for a circle. Okay. Now let's see, there is a term known as parametric coordinates. Parametric coordinates. So suppose there is a circle given to you, okay, and there is a center given to you a comma b. Now the question given us, suppose there is a question which is said to assume any point on this circle. ठीक है, क्वेश्चन पे बोला है कि आपको सर्कल के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम करना है. तो कैसे एज्यूम करोगे? द बेस्ट मेथड इज यूजिंग द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट. सो फॉर एज्यूमिंग एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, just we can use this parametric coordinate where r is your radius, a and b is your center of the circle. ठीक है. सपोज आपका सर्कल का सेंटर आ गया 0,0. सो इन दैट केस इफ आई वांट टू एज्यूम द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इट वुड बी r cos थीटा, r sin थीटा. ठीक है. मे बी दे कैन गिव इन द क्वेश्चन एज्यूम द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डायमीटर. ऐसा आ सकता है आपका क्वेश्चन में, दे मे बी एज्यूमिंग गिवन टू एज्यूम द डायमीटर एंड पॉइंट्स. सो इन दैट केस आपका a आप ऐसे ले लो, a प्लस r cos थीटा, b प्लस r sin थीटा, और a कैन आप ऐसे ले लो, a माइनस r cos थीटा, b माइनस r sin थीटा. By using this parametric coordinate, we can easily solve these questions on circle. Now, apart from circle, let us discuss few points related to parabola. Now, before coming to the discussion of parabola, let us discuss a term known as eccentricity. Now, what is eccentricity? See, certain points need to be remembered. First of all, let us consider a fixed point. Okay? Let us consider a fixed point. Let us consider a fixed straight line. Okay? Let me consider one more variable point. Let me consider the point to be P. This fixed point is known by the name of focus. Okay? And from the term eccentricity, we mean just join this line, join the variable point with the focus, then join this variable point with the fixed line. Let me give this name M. So the ratio of these two distances is nothing but it is the eccentricity. So we denote eccentricity by the letter E. So E will be PS by PM. Now how to define eccentricity? We can just write it down. Locus of a point which is moving in a plane
locus of a point, this point, locus of a point which is moving in a plane such that the ratio of its distance from the fixed point, ratio of its distance from the fixed point and the fixed straight line is always constant, is known as your eccentricity. मतलब आपका वेरिएबल पॉइंट से जो फिक्स पॉइंट वाला डिस्टेंस होगा उसका रेशियो निकालो डिस्टेंस ऑफ दिस वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा. दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज योर फोकस. And this particular ratio, it has a significance of defining different shapes. If your eccentricity comes out to be 1, that means if your distances are equal, PS equal to PM, in that case, आपका जो shape generate होगा, that will be a parabola shape. Suppose आपका eccentricity आ गया less than 1, that means PS less than PM, मतलब ये वाला distance इससे कम है. In that case आपका जो शेप जनरेट होगा that will be your ellipse वाला शेप. Similarly, if your eccentricity is greater than 1, in that case hyperbola will be generated. ठीक है. Lastly, let us discuss few points of parabola, certain terminologies. ये हो गया आपका पैराबोला का सिंपल शेप. ठीक है, अब यहां से देखो सबसे पहले लेट अस फिक्स डाउन आवर फिक्स पॉइंट. दिस इज माय फिक्स पॉइंट जिसका नाम है फोकस. फोकस ऑन दिस लाइन नाउ. सो दिस लाइन इट डिवाइड्स द पैराबोला इनटू टू इक्वल हाफ्स. सो दिस इज माय एक्सिस, जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला. शॉर्ट फॉर्म से आप इसको एओपी नाम से याद करते हो. ठीक है. And now focus on this line. This line is tangential at this point. This point is nothing but this is a vertex. ठीक है, और ये लाइन जो है ये vertex में tangent होकर निकल रहा है. मतलब it is touching the curve and just passing away. So this line is nothing but it is your tangent. Tangent कहाँ पे? Vertex पे. इसलिए नाम क्या पड़ गया? Tangent at the vertex. Short form से TAV नाम से याद करेंगे. ठीक है. Now since we know this is a vertex and vertex coordinate is 0, 0. Suppose I am assuming that this distance is a. So what is the coordinate of this point? It will be a, 0. अब सेम डिस्टेंस पे देखो, वर्टेक्स से पीछे जो सेम डिस्टेंस होगा a डिस्टेंस में आपको मिलेगा आपका फिक्स लाइन जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स स्ट्रेट लाइन. ठीक है. Secondly, suppose I am assuming any point on this parabola and from this point I am joining this distance. This is your focal length. Suppose I have taken 2 points on this parabola. I have just connected those 2 points. So this line which is generated is simple known as chord of parabola. I'm just giving you the terminologies. And suppose ये chord आपका focus through से पास हो रहा है, तो ये हो गया आपका focal chord. Normally हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया आपका chord of parabola. बट अगर ये कॉर्ड आपका फोकस टू पास होगा तो इसका नाम हो गया फोकल कॉर्ड. और अगर ये फोकल कॉर्ड हो गया परपेंडिकुलर तो इसका नाम है लेटस रेक्टम. बस ये सब टर्म्स आपको याद करना होगा फॉर लर्निंग अबाउट पैराबोला. ठीक है. सो फॉर टुडे लेट्स कंक्लूड इन दिस पार्ट. सो नेक्स्ट क्लास वी शैल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दिस टॉपिक पैराबोला. थैंक यू.